Student, today we are going to learn 10th lesson Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkind. First point is Shivaji conquers Panhala, Adil Shah gets angry. While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panhala fort from the Bijapur garrison. This threw Adil Shah into a fit of wild rage. He could neither eat nor sleep. He dispatched another Sardar, Siddhi Johar, against Shivaji. Siddhi Johar had a huge army with him. Fazal Khan, who wanted to avenge his father's death, also accompanied him. Means when Shivaji Maharaj captured means won Pannala fort, that time Bijapur's Adil Shah became very angry and he was in unrest. He was not able to eat and sleep because he always thought about Shivaji Maharaj and he wanted to defeat Shivaji Maharaj. So that is why he selected one Sardar, Siddhi Johar. And Siddhi Johar also had a company of this Fazal Khan. Fazal Khan was the son of Afzal Khan and he wanted to also take revenge of his father's death. So again they started their journey to the पन्नाला फोर्ट. सो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि अफजल खान बहुत अपसेट था क्योंकि शिवाजी महाराज ने पन्नाला फोर्ट भी अपने कब्ज़े में लिया है और अफजल खान की डेथ की वजह से उसका बेटा भी शिवाजी महाराज से रिवेंज लेना चाहता था. इसीलिए आदिल शाह जो है वो सिद्दी जौहर को सिलेक्ट करता है. सिद्दी जौहर एक सरदार है, उसको सिलेक्ट करते हैं शिवाजी महाराज को डिफीट करने के लिए और फजल खान भी उसके साथ है और वो पन्नाला गढ़ की तरफ निकल लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सीज ऑफ पन्नालागढ़. सिद्दी जौहर वॉज अ ब्रेव बट रूथलेस. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट disciplinarian. He laid siege to Pannalagarh and confined Shivaji within the fort. The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains came, Siddhi Johar would lift the siege. But Siddhi Johar did nothing of the kind. On the contrary, with the arrival of monsoon, he further tightened the siege. Supplies in the fort were running out. Shivaji was in a fix. Since he could not force Siddhi Johar to lift the siege by an open battle, he decided to receive Siddhi Johar by a clever ruse. He sent a message to Siddhi Johar to the fort that he would shortly surrender the fort. Siddhi was happy. So Siddhi Johar again laid siege, यानी वो पूरा पन्नालगढ़ को घेर लेता है. इससे क्या होता है, दैट वॉज मानसून टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट मानसून टाइम शिवाजी महाराज एंड अदर सरदार और दे वेर नॉट एबल टू केम डाउन एंड टुक वॉट एवर दैट दे ग्रोसरी दे वॉन्टेड. तो इससे क्या होता है, पन्नालगढ़ को घेर लेने से शिवाजी महाराज और उनके जो सरदार है वो नीचे नहीं आ पाते हैं और जो भी सामान लगता है ज़रूरी सामान वो उनका कम हो रहा है और ख़त्म भी होने के लिए आया है क्योंकि वो सामान लेने के लिए नीचे नहीं आ सकते मार्केट में. तो इससे क्या होता है कि शिवाजी महाराज अभी उससे ओपनली फाइट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो आर्मी है, उनके जो सैनिक है वो कम है और ये सिद्धी जौहर के सैनिक बहुत ज़्यादा है. तो वो क्या करते हैं, अभी वो ट्रिक यूज़ करते हैं और कौन सी करते हैं वो हम देखेंगे. और मानसून की वजह से उनको लगता है कि सिद्धी जौहर ये जो उसने घेर के रखा है वो अभी वो कम करेगा, उसके जो सैनिक हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट देखो, सिद्धि ट्रूप वेर ऑलरेडी टायर्ड द लॉन्ग सीज. दे वेर वेरी प्लीज टू हियर द शिवाजी एग्रीड टू सरेंडर. और शिवाजी महाराज आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, सिद्धि जौहर के जो सैनिक हैं वो भी थक चुके थे, वो भी हैप्पी हो जाते हैं. दे रिलैक्स्ड एंड द वॉच एंड इंडल्ज इन फूड, ड्रिंक एंड म्यूजिक. अभी वो एंजॉय करने लगे हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखो, शिवाजी escape from the siege. A plan was hit upon to escape from the siege. Two palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route. The other would be
occupied by another person disguised as a Shivaji. This palanquin was to live by the Rajdindi. This other palanquin would be easily spotted by the enemy's force and it would be captured by them. While the enemy celebrated the capture of Shivaji, the real Shivaji would escape by the difficult route. This was the plan. For this, a brave youth undertook this task. He resembled Shivaji in looks. His name was Shiva Kashid. He was a hairdresser in Shivaji's service. He was courageous and shrewd. Means Shivaji Maharaj decided to one plan. They decided to make Shivaji to another person, and the name of that person was Shiva Kashid. And these palanquins in which he sat, so they would go in another way, in difficult route they would choose that. And again this next Shiva Kashid would get to this सरदार ऑफ सिद्दी जौहर. तो शिवाजी महाराज ने क्या किया है, दो पालखी में दो शिवाजी महाराज बैठेंगे. तो एक रियल जो शिवाजी महाराज जो है वो एक रास्ते से जाएंगे और उनके आजू बाजू में ज़्यादा सरदार नहीं होंगे. और दूसरे शिवाजी महाराज जो बन गए हैं शिवा काशिद, वो शिवा काशिद जो है वो एक पालखी में बैठ के उनके आजू बाजू में बहुत सारे सैनिक होंगे और वो शिवाजी महाराज की तरह ही दिखेंगे. ऐसे प्लान करने से क्या होता है कि वो शिवाजी महाराज जो है रियल वो उधर से निकल जाते हैं. नेक्स्ट देखो paragraph. As planned, the palanquins carrying Shiva Kashid came out of Rajdindi. It was dark night and it was raining heavily. Still, some enemy soldiers were keeping watch. They captured the palanquin. They thought that they had caught Shivaji himself and took the palanquins to the Siddhi's camp. Jubilations began in the camp. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route. He was accompanied by Baji Prabhu Deshpande and some select. So in this way Shivaji Maharaj escaped from the enemies. And here Shiva Kashid was captured by सिद्धि जौहर सरदार. सिद्धि जौहर के सरदार जो है वो शिवा काशिद को शिवाजी महाराज समझ के पकड़ लेते हैं और सिद्धि जौहर के कैंप में लेके जाते हैं. ओके, पेज नंबर 38 देखो स्टूडेंट्स. फर्स्ट पैराग्राफ. द बंडाल देशमुख आर्मी accompanied them. After some times, the plot of Shiva Kashid was exposed, and the furious Siddhi killed him then and there. Shiva Kashid sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus, he became immortal. In this way, Shiva Kashid, who became Shivaji Maharaj, that was caught by Sardar and killed by सिद्धि जौहर. सिद्धि जौहर उसको मारता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. व्हेन द सिद्धि लर्न दैट शिवाजी हैड गिवन हिम द स्लीप, ही वॉज लिविड विद रेज. इमीडिएटली ही डिस्पैच हिज सरदार सिद्धि मासोद accompanied by big army in a hot pursuit of Shivaji. At daybreak, the pursuing home men caught up with Shivaji at the Pandarpani stream. Shivaji was now in a real trouble. With the greatest difficulty, he and his men crossed the Ghodkind. Means Shivaji was ready to cross that Ghodkind and wanted to escape. That time, this Siddhi Jauhar's one Sardar came and came means he was very close to catch the Shivaji Maharaj. So that is when Shivaji Maharaj was near to his target. That time difficulties came in front of him. तो ये जब शिवाजी महाराज उधर से छूट जाते हैं और सिद्धि जौहर को पता चलता है कि शिवा काशिद ही शिवाजी महाराज बन गया है तो उसको मार देता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है. वो दूसरे सरदार को नियुक्त करता है शिवाजी महाराज के पीछे जाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट देखो. बाजी प्रभु द ब्रेव. The angry troops of Siddhi were fast galloping towards the Ghodkind fast. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook them.
He said to Baji Prabhu, Baji, this is very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our heels. It is now impossible to reach Vishalgarh. So let us turn back and face the enemy. Baji Prabhu understood the great agitation going on in Shivaji's mind. The enemy was fast approaching the pass. The life of Shivaji and therefore Swaraj was in danger. He said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Take handful of soldier with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. I shall lay down my life in a defense of this pass if need be. If I die, there will be many other Bajis to take my place. So again, when Shivaji Maharaj understood the problem and the critical situation that Siddhi Jaur's army coming close, that time he said to Baji Prabhu ki I am not going ahead, isn't it? So I have to fight with this enemy because there is no option. जब सिद्धि जौहर के जो सैनिक है वो शिवाजी महाराज को फॉलो करते हुए पीछे आते हैं, तभी शिवाजी महाराज बाजी प्रभु के साथ डिस्कस करते हैं कि अभी मैं इधर से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि अभी उनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अभी हमारे पास आए हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी विशालगढ़ की तरफ जाऊं। तो बाजी प्रभु क्या बोलते हैं कि अभी आप स्वराज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। अभी मैं इधर जो घोड़खिंड है वो उनको पास करने के लिए उधर से उनको जाने के लिए मैं रोक लूँगा और इसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़े तो भी चलेगा। मेरे जैसे और भी बाजी प्रभु हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, But no one can replace you. Our Swaraj needs you. The enemy will attack in large numbers. We cannot hold our against them with our limited force. Please do not wait. Go ahead. We shall stop the enemy at the entrance to the pass. We shall not let him advance till we know that you have reached Vishalgarh safely. Baji Prabhu's brave words and his sense of loyalty brought tears to Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj's eyes. He was most unwilling to sacrifice this gem of a man for his personal safety. But he had no time to think of these things. He wanted to achieve his ideal of Swaraj. He fondly embraced Baji and said, We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the ford, guns will be fired. That will be the signal of our safe arrival. As soon as you hear the gun fire, abandon the pass and follow us to the fort. That time वो शिवाजी महाराज उनको जब ये डिस्कशन चल रहा होता है बाजी प्रभु एंड शिवाजी महाराज में, तभी शिवाजी महाराज के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं विशालगढ़ की तरफ निकलता हूँ। एंड देन अगेन वेन एवर ही वुड रीच देयर द गन्स विल बी फायर्ड, और ये जो सिग्नल है वो आपको मिलेगा एंड आप क्या करेंगे, वो घोड़खिंड आप छोड़ के विशालगढ़ की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाजी डिफेंस of the Ghodkind pass. So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Baji made a low bow to the receding figure of Shivaji and then prepared himself for battle. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. He divided his company of soldiers into the small groups and posted them as suitable points. The Maulas took their position and collected huge boulders and stones to be used as weapons. The Maulas across the pass were now a strong barrier in the path of the enemy. By this time, the enemy had reached the mouth of the pass and one could hear their war cries. So, when Shivaji Maharaj left that Ghodkinda and started his journey towards Vishalgarh, that time Shivaji Prabhu bowed his head, मीन्स उन्होंने झुक के उनको सलाम किया है और वो अभी
लड़ाई की तैयारी के लिए लगे हैं। और लड़ाई में वो क्या करते हैं, जो अपने मावलाज है उनको स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं और उनको लड़ाई में क्या करना है, कौन सी जिम्मेदारी है उनको बताते हैं। और वो अभी जो भी पत्थर वगैरह हैं उधर जो अवेलेबल थिंग्स है उनका वो इस्तेमाल वॉर में करने वाले हैं। Okay, in this picture you can see Baji Prabhu and Shivaji Maharaj. They are discussing in that Ghodkin. Ghodkin means here you can see narrow path between two hills, isn't it? So that is called Khind, means a narrow road between two hills. Okay, next address his troop and said, "My brave soldier and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what price has to be paid." So Baji Prabhu and his Maula stood at the mouth of the pass, firm and fearless, awaiting the enemy. The pass was difficult to cross, there being only a narrow and zigzag passage across it. So शिवाजी महाराज के जाने के बाद विशालगढ़ की तरफ बाजी प्रभु अपने मावलत जो है उनको बताते हैं कि अभी कौन सी सिचुएशन होगी पता नहीं है, लेकिन हमें ये जो घोड़खिंड है वो शत्रु को पास करने नहीं देनी है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, कौन सी भी कीमत पे हमें ये क्या करना है कि शिवाजी महाराज जाने के बाद अभी ये जो शत्रु आ रही है, शत्रु की फौज जो आ रही है उनको हमें घोड़खिंड पास करना नहीं है, उनको उधर से जाने के लिए देना नहीं है। At the other end, Shivaji was speeding towards Vishalgarh. The fort was still some distance away and it would take Shivaji at least 2 hours to reach it. If Baji Prabhu couldn't hold out for those 2 hours, Shivaji would be safe. यानी शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की तरफ जाने के लिए 2 hours लगने वाले हैं, तो 2 hours उनकी लड़ाई होनी चाहिए, तभी वो सेफली विशालगढ़ पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द बैटल ऑफ घोड़खिंड। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर द फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। द मावलास who were adept at the use of the sling harassed the enemy with showers of stones and boulders from the hilltop and killed many of them. The first batch of the attacking troops withdrew in confusion. Another batch took their place. Baji Prabhu urged his troops into the attack. The Maratha war's cry, "Har Har Mahadev," echoed through the hills, and the brave Maulas cut down the enemy's troops in the fierce and desperate attack. Through the din of battle, they heard their captain shouting encouragement to them, "Bravo, my lads! Go ahead, attack and destroy the enemy." The second batch of the enemy troops was also defeated. So because of that narrow road or narrow path between two hills in that Ghodkind, that Siddhijor's troops also came in a group to fight with that Baji Prabhu, and one troops were defeated, so second troop again came there. So Baji Prabhu also was inspiring to the Maulas and saying that ki ब्रावो माय लैड्स, गो अहेड, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें स्वराज्य के लिए ये लड़ाई लड़नी है, हमारा स्वराज्य होना चाहिए, ऐसे वो उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। और मराठा भी ज़ोर ज़ोर से हर हर महादेव ऐसी आवाज़ करके फाइटिंग कर रहे थे। तो शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। लास्ट पॉइंट, Shivaji was by now almost at the foot of Vishalgarh. Vishalgarh was also besieged by the enemy. Shivaji fought through the rank of besieging troops and was on the last lap of his ride to safety. Means अभी वो पहुँचने ही वाले थे शिवाजी महाराज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाजी द ब्रेव। इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास
continue unabated. Enraged at the defeat of his first two attacks, Sidi Masud organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. They surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage. Though wounded and attacked from all sides with his body covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. At the same time, he urged his Maulas to attack the enemy. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew. But Baji was fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from the Vishalgarh. So Baji at the end, when the third troop, यानी तीसरी जो सैनिक का जो ग्रुप है वो इस घोड़खिंड में बाजी प्रभु की तरफ अटैक करने के लिए आता है एंड उनको घेर लेता है, तभी ये बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो खुद को जो भी तोफ की आवाज़ है विशालगढ़ से आने की, वो सुनने के लिए बेताब थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, घोड़खिंड बिकेम्स Pawankhand, and then the sound of gunfire was heard from Vishalgarh. Maharaj has reached Vishalgarh. I have done my duty. Now I can die in peace. So saying, Baji breathed his last on this historic battlefield. When Shivaji heard this news on Vishalgarh, he was greatly grieved. He exclaimed, Baji Prabhu Deshpande laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj. The Bandals gave a great battle. So it was because of brave patriots like Baji Prabhu and that Swaraj was won. Their blood made the Ghodkhind a place holy in Swaraj. Ghodkhind became immortal in history as a Pawankhand. We pay our repeated homage to the brave Baji Prabhu and his brave men. So in this way, when the Shivaji Maharaj reached Vishalgarh and heard the news of death of Baji Prabhu, that time he became very sad, and this Ghodkhind became immortal in the history as a Pawankhand. And when this Baji Prabhu at the end heard the sound of gunfire, he understood and he said to himself that I am now ready to die in a पीस, बिकॉज शिवाजी महाराज जो है अभी विशालगढ़ की तरफ पहुंच गए हैं और मुझे अभी मौत भी आए तो भी चलेगा, मैं अभी शांति से मैं मर सकता हूँ, क्योंकि अभी शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं। और जब शिवाजी महाराज ये न्यूज़ सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है। और ये जो घोड़खिंड है पावनखिंड की नाम से हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ऐसे जो ब्रेव पर्सन है जैसे बाजी प्रभु, वो भी हिस्ट्री में अमर हो जाते हैं। उनका हम बार बार नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके योगदान की वजह से ही शिवाजी महाराज स्वराज्य निर्माण कर पाए हैं।